Good evening to all of you. Welcome to RAYACADEMY IAS भुवनेश्वर. समस्त को RAYACADEMY भुवनेश्वर को बहुत बहुत स्वागत. आज आम डिस्कसन करिबा तुम एग्जाम थिला पेपर 2 जीएस पेपर 2 प्रिलिम्स टेस्ट 2024 जोड़ा कि 23 मार्च रे हेतिला एग्जाम. तार आज आंसर एनालिसिस करिबा. आम जीवा फर्स्ट क्वेश्चन को. Consider the following statements regarding the Kalinga style of temple architecture. तीनटा ऑप्शन अछि ता भितरे. It is a sub style of the Dravido style. It is primarily found in Odisha, West Bengal and parts of Andhra Pradesh. Kakhara deula is associated with temples dedicated to Chamunda and Durga. Which of the statements given above is or are correct? आम प्रथम देखा स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 अच्छी. इट इज ए सब टाइटल ऑफ द द्राविड़ स्टाइल, कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. सो स्टेटमेंट 1, द सब टाइटल सब स्टाइल ऑफ द द्राविड़ स्टाइल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. So far as Indian temple architecture is concerned, we can divide it into 3 parts. That is Nagara style, Dravido style and Besara style. मुख्यतः ये तीनोटी स्टाइल टेम्पल देखा जाए. सो द सब इट इज ए सब स्टाइल ऑफ द द्राविड़ स्टाइल. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओडिशा रे जो कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, देयर वी फाइंड द नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल दैट इज नोन एज द नागर स्टाइल. सो कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इट इज नॉट ए सब स्टाइल ऑफ द द्राविड़ स्टाइल. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज सो फर्स्ट स्टेटमेंट 1 इट इज इनकरेक्ट. कहीं ना जो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर it is broadly classified into Nagara style, Dravido style and Besara style. Nagara style है North Indian temple architecture, Dravido style है South Indian temple architecture, और Besara style है mix up. Nagara style plus Dravido style जो mix up temple architecture that is known as the सेटा होची Besara style of architecture. किंतु आउ गोटे रहउची ता भितर अछि आउ गोटे ऑप्शन ने तुमर देछि एथिरे कखरा एंड देउला एसोसिएटेड विथ द Chamunda and Durga. ठीक अछि. It is primarily found in Odisha, West Bengal and parts of Andhra Pradesh. So Nagara style of temple architecture by Kalinga style of temple architecture it is found in Odisha, West Bengal and parts of Andhra Pradesh. Second, Kakhara deula is associated with the temple dedicated to Chamunda and Durga. एटा मध्ये करेक्ट अछि. एथिरे हां 1 टा काटी देले आ दरकार नै दिटा हम जानि जाइछंती. जदि 1 टा रहिला नै एते टाइम भी हम नबानी एथिरे टाइम सेविंग करिया पई तक आम कर दी परिबा. इट इज ए सब स्टाइल ऑफ द द्राविडियन स्टाइल. एटा गोटे रंग जदि हे गेला तार ए बाकी दिटा ठीक अछि. एटी 1 बा 2 and 3 एथिरे हमर अछि ऑप्शन अछि. सो बी इज द करेक्ट आंसर. सो स्टेटमेंट 1 जहां हम डिस्कशन करले इट इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 3 इट इज आल्सो करेक्ट. अच्छा आउ गोटे एथिरे अछि सो फार एज द temple architecture is concerned, another style of temple architecture that is known as the Gadag style of temple architecture. जोटा कि हम परवर्ती क्वेश्चन में अछि एथिर ऑप्शन नाही. सेटा अछि Gadag style. ए Gadag style of temple architecture कोन? It refers to architecture of temples built in western Chalukyas of Kalyani, and it is situated in the Gadag district of Karnataka. Mainly Karnataka रे बा साउथ इंडिया रो कर्नाटक रे mainly Gadag district जो temple architecture देखा जाए mainly it flourished during the western Chalukyas of Kalyani. तांका समय जो मंदिर तैयारी हितला वेस्टर्न चालुक्य मान समय से ही समय जो टेम्पल आर्किटेक्चर थिला कर्नाटक ताको हम गडक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कोछ. दिस क्वेश्चन एटा आगु को अछि ए गडक स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर पर क्वेश्चन रे अछि. सो दिस इज करेक्ट. एटा क्लियर हे गेला. सब स्टाइल ऑफ द द्राविडियन स्टाइल एटा नुह. It is primarily found in Odisha, West Bengal and parts of Andhra Pradesh. ठीक अछि. And Kakhara deula is associated with the temple dedicated to Chamunda and Durga. Kakhara deula भुवनेश्वर रे तार एग्जांपल अछि. Kakhara deula कोन टेम्पल एग्जांपल अछि? बैतल देउल हम जो कहउछथि बैतल देउल that is dedicated to Chamunda and Durga, mainly the mother goddess. तेनु सेटा होछि Kakhara style of temple architecture. तापर हम जिवा सेकंड क्वेश्चन. The temple architecture of Odisha is unique for its representations. The temple architecture of Odisha is unique for its representations and is called the Kalinga style of temple architecture. This style is broadly categorized under which of the following? Nagara style, ki Besara style, Dravido style, Gadag style.
टेम्पल आर्किटेक्चर इन ओडिशा तार आंसर कौन हम नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सो ओनली वन इज करेक्ट बेसर स्टाइल नुह आम पढ़ले बेसर स्टाइल हूँ द्राविड़ स्टाइल साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर नगर स्टाइल है नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कलिंग स्टाइल इट बिलोंग्स टू नगर स्टाइल सो बेसर स्टाइल है इट इज बोथ मिक्सअप ऑफ द नगर स्टाइल एंड द द्राविड़ स्टाइल एंड गड़क स्टाइल जहाँ मुझे डिस्कसन कली दैट इज फाउंड मोस्टली इन कर्नाटक तेणु गड़क स्टाइल भी नुह सो नगर स्टाइल इट करेक्ट आंसर एटा बुझीला देख टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा इज यूनिक फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशंस एंड इज कॉल्ड द कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तेणु कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज ए पार्ट ऑफ द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सो फार एज इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज कंसर्न वी फाइंड द नगर स्टाइल बेसर स्टाइल एंड द द्राविड़ स्टाइल ए नगर स्टाइल को बिलोंग करुच्ची ओडिशार जोटा होची कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तेणु एटा हला करेक्ट एगुडा नुह क्वेश्चन नंबर 2 सो इट इज द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर तापर आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 3 with reference to the Rekha deula style of Kalinga temple architecture consider the following Kalinga style of temple architecture it is divided into three parts Rekha style Pida style आउट हला कोन कखर style that is the Kalinga temple of architecture तीन भाग में तक विभक्त कर दी परिबा with reference to the Rekha deula style of temple architecture consider the following Rekha style example कोन अछि हम पाखरे कहि परिबो the best example of Rekha Jagannath temple and the Lingaraja temple they are the Rekha style of temple architecture curvilinear शिखर सेथिरे अछि अच्छा it is characterized by a tall building with a शिखर so with reference to Rekha deula style of temple architecture consider the following which of the statements given above is or are correct एथर कोटा करेक्ट अछि अच्छा देखिबा it is Kalinga style of temple architecture it is characterized by a tall building with a शिखर it is correct so 3-1 it is correct second the Lingaraja temple at Bhubaneswar is an example of Rekha deula it is also correct it typically houses the sanctum sanctorium it is sanctum sanctorum kono जो गर्भगृह हमें कहउछंती the main the deity of the temple where he is placed that is known as the sanctum sanctorum जो हमें जाको गर्भगृह कहउछंती मंदिर रो मुख्य देवता जे जोटी से उपस्थित पूजा पांती that is known as the sanctum sanctorum अच्छा रेखा स्टाइल रो टेम्पल आर्किटेक्चर रो तार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेम्पल कोन कहि परिबो ना डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर प्रथमे कोन अछि भोग मंडप जगमोहन फास्ट कोटी अछि प्रथमटा होछि कोन भोग मंडप तापरे नाट मंडप ता आगु अछि जगमोहन जो ऑडियंस हम जो दर्शन करंती ता पाखु रहला गर्भगृह सो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ द रेखा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रथमे मंदिर को प्रवेश कला बेलू प्रथमे होछि भोग मंडप तुम पुरी मंदिर जगन्नाथ मंदिर देखिबे मुहरे जो बांधी की भोग नउथांती रखंती सेही पाखरे प्रथमे ठाकुर बहुत दूर रे अछंती गर्भगृह रे अछंती भोग लागिबो बहुत दूर रे जाईकी प्रथम जो मंदिर सेटा ला भोग मंडप पाखे नाट मंडप दशावतार नाच जो ठाकुर का जो हुए राति जो बड़ सिंहार बेश समय सेटा होछि नाट मंडप देवदासी नृत्य सेटा हुए नाट मंडप रे तापर आसिला जगमोहन ऑडियंस हॉल आमे जो देखि की दर्शन करन ठाकुर जगमोहन रु ता पाखक रहिला गर्भगृह जेटा मेन टेम्पल that is the sanctum sanctorum तो कह जाए sanctum sanctorum that is the main temple so these are the four stages of temples in the Rekha style of temple architecture से तो इधर कोटा करेक्ट हला D correct 1 2 and 3 all are correct इथे कोन पछाची which of the statement given above is correct एटा बुझिला so आउथरे देखो रेखा देउळ it is characterized by a tall building with a शिखर है कौन मंदिर टॉप ऑफ द टेम्पल जो आयुध थाए तार तल पोर्शन दैट इज शिखर कर्विलिनियर स्ट्रक्चर गोलाकार जो मंदिर शिखरटा द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर इज आर एग्जांपल ऑफ रेखा देउळ ठीक अछि इट टिपिकली हाउसेस द sanctum sanctorum दैट इज आल्सो करेक्ट सो बोथ ऑल 1 2 3 आर करेक्ट कोणार्क मंदिरटा होची पीढ़ स्टाइल रे नाट्य मंडपटा बहुत दूर रे अलगा अछि मेन मंदिर ठारू नाट्य मंडप मंदिर कोणार्क मंदिर तुम देखिबा ए जो टेम्पलटा रहिछि ताटू बहुत दूर रे अछि नाट्य मंडपटा कोणार्क में जो पीढ़ स्टाइल पीढ़ होछि पिरामिडल स्टाइल पिरामिड स्टार स्ट्रक्चर टेम्पल स्ट्रक्चर पिरामिड स्टाइल अछि जो रेखा स्टाइल तुम देखिबा मंदिर रो चारिपटे जो सिंह माने थिबे मूर्ति भी देखिछ मंदिर ऊपर थिबे से माने जो बाड़ रे सब थिबे ता कहै जाय जो त्रिरथ स्टाइल पंचरथ स्टाइल सप्तरथ स्टाइल दैट आर 7 पार्ट्स ऑफ द टेम्पल गोटे मंदिर रो हला ना ये गोटे पार्ट एटा त्रिरथ स्टाइल
पंचरथ पांचटा पार्ट, सप्तरथ सातटा पार्ट अच्छी किंतु एई मझिरे देखिए गोटे जगह सिंह सब अच्छा सिंहर मूर्ति अच्छी मंदिर रे कौन से गुड़ाक मंदिर ऊपर कहीं सिंह अच्छी सिंह मूर्ति अच्छी एमती देखिछ के मन पड़ुछि के देखिछ सिंहटा आंठेकी थिबे मंदिर को बाहर करी कौन से विंडोज से फॉर वेंटिलेशन मंदिर भीतर जो वेंटिलेशन दीज आर द विंडोज जोटिया सिंह गुड़ा सब अच्छा त्रिरथ है तीन टा भाग मंदिर तीन टा बाड़ जो आम कहते पंचरथ पंच बाड़ पांचटा स्ट्रक्चर आर्ट आर्किटेक्चर अच्छे पांच भाग विभक्त सप्तरथ स्टाइल है सातटा पार्ट ये सब सातटा पार्ट थी मंदिर यहाँ शिखर ताऊपर अच्छे आयुध माने विष्णु मंदिर आम जाना आयुध जाना चक्र थी शिव मंदिर जाना शैविजिम जोटा हूँ त्रिशूल थी यह सब जिन सो बोथ ऑल आर 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट पीढ़ हूँ पिरामिडिकल स्टाइल टेम्पल द पीढ़ देउल स्टाइल टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विथ आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स आउटर डांसिंग हॉल से मंदिर भितर ना सेटा एबे जो नाट मंडप आम देखुचे कोणार्क मंदिर गले देखिए नाट मंडपटा कोणार्क मंदिर बहुत दूर अच्छी नाट मंडप सो इट इज द पीढ़ देउल कौन होची ना कौन आउटर डांसिंग हॉल एंड ऑफरिंग हॉल आउ कौन अच्छी सैंक्टम सैंक्टोरियम टेम्पल्स ऑफ फेमिनाइन डिटीज नॉन ऑफ द एबव सो पीढ़ देउल स्टाइल टेम्पल्स आर एसोसिएटेड विथ आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स सैंक्टम सैंक्टोरम सेठी काहे अछि कोठी पीढ़ देउल रे मुख्य मंदिर तो नाही सेठी पीढ़ देउल रे सूर्य मंदिर मुख्य मंदिर किसी ना दैट इज नॉट द मेन टेम्पल आम जो मंदिर देखुंती सेटा हूँ दैट इज नॉट द मेन टेम्पल ऑफ द पीढ़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सैंक्टम सैंक्टोरम नहीं टेम्पल्स ऑफ फेमिनाइन डिटीज सेमती किसी नहीं हाँ कखरा स्टाइल फेमिनाइन जोटा सेटा कखरा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर माने जोटा हूँ माने चामुंडा बा दुर्गा को कहउछंती एटा हूँ कखरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आ सैंक्टम सैंक्टोरियम एटा हूँ रही हमर ए जो रेख देउल रे रेख देउल रे सैंक्टम सैंक्टोरियम फेमिनाइन डिटीज रे कखरा स्टाइल रे सो आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स एटा हूँ पीढ़ देउल रे गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स मेन सैंक्टम सैंक्टोरियम नाही एवं डांसिंग हॉल आ ऑफरिंग हॉल कौन आम जो भोग मंडप कहते जो भोग लगे ठाकुर सब दीटा का मेन मंदिर ठारू दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द पीढ़ देउल मंदिर सहित लगे चारोटी स्टेज होगी न थाए अलग अलग रही है सो आउटर डांसिंग हॉल आ ऑफरिंग हॉल दीज आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीढ़ देउल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर सैंक्टोरम हूँ जो मुख्य माने ताकू गर्भगृह बोल जो कहा जाए सैंक्टम सैंक्टोरम है गर्भगृह गर्भगृह कौन ता भीतर जो मेन डीटी ऑफ द टेम्पल जो बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ पुरी मंदिर अच्छा लिंगराज जो शिवलिंग जो अच्छी सो दैट इज द सैंक्टम सैंक्टोरम मेन टेम्पल खाली जो हूँ सैंक्टम सैंक्टोरम तार अर्थ हूँ गर्भगृह मुख्य मंदिर जोटा मेन टेम्पल जोटा जोटा आम शिखर देखती मंदिर रे मेन टेम्पल वेयर द लॉर्ड इज वर्शिप्ड दैट इज द सैंक्टम सैंक्टोरम मुख्य देवता जो गर्भगृह शिव मंदिर हो बा विष्णु मंदिर हो बा जगन्नाथ मंदिर हो जो मंदिर हम देखुं रेख स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर द मेन डेटी वेयर ही इज वर्शिप्ड दैट टेम्पल इट इज नोन एज सैंक्टम सैंक्टोरम मुख्य मंदिर जोटा बा गर्भगृह जोटा तापर आम जीवा नेक्स्ट एटा बुझी तो सैंक्टम सैंक्टोरम अर्थ है मुख्य मंदिर बा गर्भगृह टेम्पल्स ऑफ फेमिनाइन डिटीज है चामुंडा बा दुर्गा काली जो माने मदर गॉडेस जोटी वर्शिप होती से गुड़ाक हूँ कखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे बैतल देउल आमर ये भुवनेश्वर में तेणु चामुंडा मंदिर है दुर्गा मंदिर है ये गुड़ाक हूँ कखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कखर स्टाइल पुणी कौन टेम्पल आर्किटेक्चर गोटे हूँ रेख स्टाइल गोटे है पीढ़ स्टाइल गोटे कखर स्टाइल अच्छा रेख स्टाइल जो मंदिर स्ट्रेट थाए स्ट्रक्चर टाक पुरी मंदिर स्ट्रक्चरटा जमी अच्छी लिंगराज मंदिर स्ट्रक्चर से भाया अच्छी गोटे अच्छी शिखर अच्छी आम आयुध अच्छी दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेख देउल पीढ़ देउल है पिरामिड स्टाइल रे प्रथम चौड़ा थी छोट थी छोट जो कोणार्क मंदिर हूँ आम एग्जांपल गोटे पीढ़ स्टाइल रेख स्टाइल पीढ़ स्टाइल आ कखर स्टाइल कौन कखर स्टाइल हूँ टिपिकल ओडिया टर्म गोटे कखारू जो आम कहती से आसी टेम्पल तार नामकरण सेमती कराई कखर स्टाइल कखारुआ स्टाइल के बहरे ओडिया तुम देख कखारुआ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोली वर्णना कराई कहीं कहुए सेमती हेमिस्फेरिकल डोम ता उपरटा हेमिस्फेरिकल डोम एमती शिखर न थाए से चूल न थाए सीधा कंस्ट्रक्शन हो न थाए
लिंगराज मंदिर पाखे जो देखिबा बोईताल देउळ बोली कहउछन्ती तीन मुंडिया देउळ बोली कहउछन्ती ताकू जेटा कि पानी रे बुडी जाए से जो गणेश शंकर जो मूर्ति अछि मंदिर कैंपस भीतर रास्ता पानी सब ता पस जाए वर्षा दिन आरंभ होला पर रास्ता कड़े से मंदिर अछि से दैट इज द एग्जांपल ऑफ कखर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर जेंति कखर सो मार्केट एमति गोटे पीस पीस मिले कखर टा पीस पीस कर काटी दियंती जेमति मिले से मंदिर सब हेमिस्फेरिकल डोम तेनु कखारु शब्द बोईतालु जो हम कहउछन्ती बोईतालेश्वर महादेव किए कहती बोईतालु कखार को भी बोईतालु कहती कहीं ओडिशा रे टिपिकल ओडिया टर्म देखिए कखारु बोईतरे सब जाउथला कखारु सब बाहर को जो साधु भगवान नौतले माने वाणिज्य करिया पई ओडिशार जो वेजिटेबल्स ताको भी से नेकी बोईतरे नेकी जाउथले तेन बोईतरे से जो फलटा नेकी जाउथला ताको बोईतालु बोलता ना दिया हेतला तेन बोईताल देउळ सेति ताको मध्ये कहआ जाय ता ऊपर मंदिर ऊपरटा हेमिस्फेरिकल डोम ए भलिया सब रखाई छि ए भलिया तीनटा एमति मंदिर अछि ता ऊपरे एमती शिखर स्टाइल नुह से रेख स्टाइल नुह तेणु ताकू कह कखर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर एटा क्लियर हो गला तो पीढ़ देउलर कौन पीढ़ देउल स्टाइल टेंपल्स आर एसोसिएटेड विथ आउटर डांसिंग एंड ऑफरिंग हॉल्स से भोग मंडप और नाट मंडप ए दुटा मंदिर ठारू अलग होगी थाए एका सागर गोटे स्ट्रक्चर भितर न था पढ़े पढ़ा हो गले तुमको आउट इजी लगे यहाँ जेहेतु पढ़ी न तुम खाली परीक्षा देच हाँ द कोणार्क सन टेंपल इज डेडिकेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज एथरे किसी भाबिबार नै कि कहिबेरे तो भितरु एबीसीडी भितरु सी तार कौन प्रमाण हम पाखे अछि हाउ डू यू नो दैट इट इज डेडिकेटेड टू सूर्य हाँ तापर आउ कौन अछि 24 व्हील्स आर देयर 24 व्हील्स कोणार्क मंदिर 24 टा चक्क अछि ए 24 टा चक्क कौन सिग्निफाई करूची 24 आवर्स ए डे इज डिवाइडेड इन 24 आवर्स गोटे दिन होची 24 घंटा 24 आवर्स तेन 24 टा चक्क सेथिरे अछि अच्छा 24 टा चक्क भितरे 8 टा स्पोक अछि 8 टा स्पोक एमति अछि चक्क भितरे स्पोक अछि ए 8 टा स्पोक कोन 8 प्रहर गोटे प्रहर होची 3 घंटा प्रथम प्रहर द्वितीय प्रहर आमे कहूँ दीपहर खाइबा केतବେଳେ हेलानी आमे कहूँ दोपहर खाइबा को आमे दिन गोटे बेलू भावुँ दीपहर हेगला बोलिक तेणु 8 प्रहर 8टा प्रहर गोटे दिन आ गोटे प्रहर होची 3 घंटा सो देयर आर 8 स्पोक्स एटा होची सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ सन गॉड तेणु सूर्यंकर प्रतीक हला 24टा चक्क अछि से 24टा चक्क भितर प्रत्येक चक्कर पुणी 8टा स्पोक अछि 8टा स्पोक हला 8 प्रहर को बोली मीन करूची कोणार्क मंदिर सो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य तापर आसला क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिंगराज टेंपल एट भुवनेश्वर इट वाज ओरिजिनली बिल्ट एज ए शैव टेंपल लिंगराज टेंपल इट वाज ओरिजिनल एटा सबुठार इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतक भितर मते एटा ही लागिला बहुत ट्रिकी क्वेश्चन एटा अछि ए क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन टिके एथरे टिके ब्रेनस्टॉर्मिंग छोटिया टिके अछि मुंडा खेलिया पई consider the following statements regarding the Lingaraja temple at Bhubaneswar इथे पचाची which of the statements given is correct अच्छा 1 it was originally built as a Shiva temple Lingaraja temple originally Shiva temple थिला शिव का ना कौन त्रिभुवनेश्वर शिव मंदिर लिंगराज टेंपल आउ कौन कह जमी श्रीक्षेत्र है पुरी लिंगराज मंदिर कौन कह कौ क्षेत्र अर्क क्षेत्र है कोणार्क and Lingaraja temple it is known as एकाम्र क्षेत्र है Lingaraja temple एकाम्र क्षेत्र माने कौन it is believed that there is only one mango tree जोटी मंदिर होईची से मंदिर कंस्ट्रक्शन समय गोटे ही आंब गछ सेठी थिला आम्र माने एकाम्र माने एक आम्र गोटे आंब गछ सेठी मंदिरटा प्रथमे तयारी हेतिला तेनु लिंगराज मंदिर एकाम्र क्षेत्र बोली कहउछ अच्छा इट वाज ओरिजिनली बिल्ट एज ए शिव टेंपल इट इज करेक्ट later elements of Vaishnavism were incorporated into it the presiding deity is known as Harihara तु कहला ऑप्शन 2 टा एटा करेक्ट कि नहीं later elements of Vaishnavism were incorporated into it Vaishnavism was incorporated प्रथमे थिला basically it was constructed originally as a Shiva temple then later the elements of Vaishnavism were incorporated into it सेठी लिंगराजन का मंदिर रे तुमे देखिबा जगन्नाथ का मूर्ति भी अछि मंदिर रा पश्चिम द्वार रे
आम सिंह द्वार पशिले लिंगराज मंदिर गले मंदिर बाहर की पश्चिम द्वार गले से जगन्नाथ मूर्ति ऊपर रखाई। हाँ तो प्रिजाइडिंग डीटी इज नोन एज हरिहर बोथ हरि एंड हर। तेणु आम केमती जानिबा जे लिंगराज मंदिर तार बेसिक एलिमेंट्स कौन हरिहर मंदिर बोली जो चक्र अच्छी ऊपर त्रिशूल अच्छी चक्र भी अच्छी हाफ इज त्रिशूल एंड हाफ इज चक्र व्हील। तेणु सी हूँ हरिहर मंदिर लिंगराज आ गोटे नाम हरिहराय लिंगराजाय जो मंत्र पढ़े भाई ना जल लगी कला बेलू से पढ़ुव हरिहराय लिंगराजाय एम सब मंत्र अच्छी तेणु लिंगराज टेम्पल द प्रिजाइडिंग डीटी इज ऑल्सो नोन एज हरिहर इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1 2 and 3 ऑल आर करेक्ट ठीक अच्छे। हाँ एकाम्र क्षेत्र त्रिभुवनेश्वर त्रिभुवनेश्वर जो महादेव का ना हूँ त्रिभुवनेश्वर त्रिभुवनेश्वर का ना अनुसार ये जगार ना है भुवनेश्वर। शिव ही इज नोन एज त्रिभुवनेश्वर शिव का ना हूँ त्रिभुवनेश्वर बुझेगा आज रिजल्ट ऑफ व्हिच द प्लेस इट इज नेम्ड आफ्टर हिम एंड इट इज नोन एज भुवनेश्वर। तो त्रिभुवनेश्वर का ना अनुसार है भुवनेश्वर ये जगार ना। So it was originally built as a Shiva temple. It is correct. Later elements of Vaishnavism are incorporated into it. This is also correct. And presiding deity is known as Harihara. This is also correct. अच्छा later elements of Vaishnavism are incorporated into it. Vaishnavism incorporate ही थिला शैविज्म समय रे बा जो केसरी डायनेस्टी सोमवंशी का समय तो लिंगराज टेम्पल ही ना जजाति केसरी जजाति 2 आरंभ करथिले उद्योत केसरी कंप्लीट करथिले। तो लिंगराज टेम्पल इट वाज स्टार्टेड बाय जजाति 2 एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय उद्योत केसरी। किंतु से समय वैष्णविज्म रो लैटर स्टेज रे वैष्णविज्म रो इनकॉर्पोरेशन हेइथिला वैष्णव धर्म भी प्रचार हेइथिला से समय तार किछि प्रमाण हम पाखे अछि कोन एनी प्रूफ एनी एविडेंस इन भुवनेश्वर where there are the सोमवंशी रूलर दे मेनली दे पैट्रोनाइज शैविज्म किंतु से समय वैष्णव धर्म को मध्य से समय तार प्रसार घटिथिला तार एनी एग्जांपल हम पाखे अछि कि नै। Only one Vaishnava temple is there in Bhubaneswar except that temple or all Shaiva temples. Bhubaneswar तुम जिते मंदिर देखिबो मु एठिके कथा कहूनी माने मेन भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पाखा पाखी जतक मंदिर अछि all are dedicated to Lord Shiva but only one temple is there which is dedicated to Vishnu. Ananta Vasudeva that is the only temple that is dedicated to Vishnu. तो की तयारी करचंती अनंत वासुदेव मंदिर हाँ लैटर स्टेज रे हितला सेही समय ही नथिला परवर्ती काल रे हितला। तेनु अनंत वासुदेव मंदिर तयारी करछि चंद्रिका देवी she constructed the Ananta Vasudeva temple whereas all the temples are dedicated to Lord Shiva only Ananta Vasudeva temple it is dedicated to Vishnu Ananta Vasudeva हेले विष्णु। तेनु गोटी होछि भुवनेश्वर विष्णु मंदिर काली माने क्विज जो अछि उत्कल दिवस ए क्वेश्चन टा रखिछि जे एक्सेप्ट माने बिसाइड्स ऑल द Shaiva temples in Bhubaneswar that is only one Vishnu temple what is that temple and who what is that temple what is एमथि खाली पचाछि क्वेश्चन टा that is the Ananta Vasudeva temple that is built by Chandrika Devi। तापरे जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 7 which of the following temple is known for its distinctive कखर style architecture एटा तो जानि गले हमें एटा कहि परिबो कखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज द बैतल देउल चामुंडा और दुर्गा को से डेडिकेट कराई छी कखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बैतल देउल। तार जो टेम्पल टॉप टा होची सेमी सिलिंड्रिकल एई भलिया बैतल देउल that is the कखर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आमे पढिले रेख स्टाइल पीढ़ स्टाइल कखर स्टाइल रेख स्टाइल हैला पुरी और भुवनेश्वर पीढ़ स्टाइल हैला कोणार्क टेम्पल एंड कखर स्टाइल हैला बैतल देउल इन भुवनेश्वर डेडिकेटेड टू चामुंडा को उत्सर्ग कराई छी मंदिर। तापरे जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम टिके इजी क्वेश्चन अछि तापर को डिफिकल्ट क्वेश्चन अछि। अच्छा द टर्म मेघनाद प्राचीर रेफर्स टू द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ ए टेम्पल a high fortified wall surrounding a temple the assembly hall within a temple complex the offering hall in a temple। ए पिला माने केते आसी गले म कथा ही पारुनी सुपना रानी संयुक्ता नमिता ठीक अछि गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। फास्ट टेस्ट कंप्लीट हेइनी ठीक अछि फास्ट टेस्ट कंप्लीट हेइनी जानि छी
आम 30टा पाखापाखि क्वेश्चन बोधे करथिले कि कोन 25 20टा करथिले तेनु फास्ट टेस्ट आम कंप्लीट करिया पुन टाइम बाहर करके विल कंप्लीट द फास्ट टेस्ट एई 2 घंटा समय भितर सब तो गोटे क्लास रे हेई परिबो नाही आम टाइम बाहर करिवा डिस्कशन पई डोंट वरी आउ के रहले एनी प्रॉब्लम ना हाँ ए जो आ गोटे थैंक यू किए कहिच सुनीता जो कोणार्क टेम्पल इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य मु खाली कहली 24टा चक अच्छी आउ 8टा स्पोक अच्छी प्रत्येक चक्कर सेरा तापरे ता सेरा सुनीता गोटे आ गोटे इनफॉरमेशन देइचंती थैंक यू सुनीता जे 7 हॉर्सेस आर आल्सो देयर 7टा घोड़ा 7टा हाँ 7टा घोड़ा होची 7 डेज ऑफ ए वीक गोटे सप्ताह जो 7टी दिन 7 हॉर्सेस दे आर द सिंबलिकल एक्सप्रेशन ऑफ ए वीक दैट इज द 7 डेज थैंक यू भूली जाउची बेले बेले मन पके दीचो बहुत धन्यवाद अच्छा आमे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को द टर्म मेघनाद प्राचीर रेफर्स टू द मेन एंट्रेंस गेट ऑफ ए टेंपल ए हाई फोर्टिफाइड वॉल सराउंडिंग ए टेंपल द असेंबली हॉल विद इन ए टेंपल कॉम्प्लेक्स द ऑफरिंग हॉल इन ए टेंपल मेघनाद प्राचीर द फोर्टिफाइड वॉल सराउंडिंग ए टेंपल पुरी जगन्नाथ मंदिर रे मेघनाद प्राचीर अछि अच्छा पुरी जगन्नाथ मंदिर रे केवल मेघनाद प्राचीर नाही दुईटा प्राचीर अछि गोटे होची बाहर बेढ़ा गोटे होची भीतर बेढ़ा मेघनाद प्राचीर ता भीतर कोटा ना बाहर बेढ़ा जोटा आउटर वॉल जोटा आउटरटा बेसी हाइट अछि आउटर वॉल दैट इज नोन एज द मेघनाद प्राचीर द हाई फोर्टिफाइड वॉल सराउंडिंग ए टेंपल तेनु पुरी मंदिर रे दुईटा अच्छी सराउंडिंग वॉल्स द आउटर वॉल इट इज नोन एज मेघनाद प्राचीर एंड द इनर वॉल्स इज नोन एज के कहि परिबो मेघनाद प्राचीर हैला मंदिर रा बाहर पट कांथ हम जो देखुचंती बहुत हाइट अछि आ गोटे भीतर पट कांथ भी अछि मंदिर रा दीज आर द प्रोटेक्शन टू द टेंपल्स माने टेंपल कॉम्प्लेक्स को ताको प्रोटेक्शन देवा पई ए हाई फोर्टिफाइड वॉल तयारी हितला मेघनाद प्राचीर जोटा भी इनर वॉल को कौन कह जाए भीतर प्राचीर को कौन कह जाए कुर्म बेढ़ा दैट इज आउटर वॉल सराउंडिंग द टेंपल द हाई फोर्टिफाइड वॉल आउटला कुर्म बेढ़ा गोटेला मेघनाद प्राचीर अनदर इज कुर्म बेढ़ा टू सराउंडिंग हाई फोर्टिफाइड वॉल्स आर देयर एटा बुझिला मेघनाद प्राचीर आ गोटे कुर्म बेढ़ा दीटा प्राचीर अछि मंदिर रे द टर्म मेघनाद प्राचीर रेफर्स टू द हाई फोर्टिफाइड वॉल सराउंडिंग ए टेंपल अच्छा तापरे जीवा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 9 जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर इज ए टर्म यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल्स लिंगराज टेंपल मुक्तेश्वर टेंपल राजारानी टेंपल जगन्नाथ टेंपल जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर मुक्ता जेम माने मुक्ता मुक्तेश्वर टेंपल व्हाई इट इज नोन एज द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर काहे कि तमे तो कहिबा मुक्तेश्वर टेंपल रो सिग्निफिकेंस कोन इट इज हाँ तोरण तो अच्छी आउ कौन अच्छी ना राजारानी टेंपल बोधे तार सिग्निफिकेंस अलग अन्य सब टेंपल ठारू हाँ मेन डेटी ना किंतु मुक्तेश्वर मंदिर राजारानी टेंपल आउ डिफरेंस कौन अच्छी गोटे अच्छी पंच रथ स्टाइल आ गोटे अच्छी पंचायतन स्टाइल कौन सेंटर मेन टेंपल फोर कॉर्नर्स रे चारि कोण रे एटा जो हमतला ना तार बेस एठेला मेन टेंपल ए कॉर्नर गुडा कर आ गोटे गोटे टेंपल अछि दैट इज नोन एज पंचायतन टेंपल पंचरथ हैला मंदिर रा स्टाइल त्रिरथ सप्तरथ पंचरथ जो बाड़ थाए मंदिर रा हैला किंतु पंचरथ त्रिरथ सप्तरथ बुझिला एठाला पंचायतन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर छाड़ आमर क्वेश्चन है जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर किए ना इट इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपल दैट इज द मुक्तेश्वर टेंपल काहे कि इट इज बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुक्तेश्वर टेंपल इट इज फिल्ड विथ आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहु कारुकार्य अछि मुक्तेश्वर मंदिर रे सेतिमे ताको हमें कहउछंती द जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर इट इज बिकॉज ऑफ इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्वेश्चन नंबर 9 द मुक्तेश्वर टेंपल इन भुवनेश्वर डेटिंग बैक टू 10th century it is often referred to as the gem of Odisha architecture due to its exquisite architectural details, intricate carvings and overall aesthetic appeal
despite being smaller than some of the other major temples. सब मंदिर ठारे मुक्तेश्वर मंदिर हाइट बहुत कम, छोटिया मंदिर पुणी तोरण पुणी अच्छी एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल तो तोरण तक जहाँ कहते मुक्तेश्वर मंदिर सामने गोटे तोरण अच्छी that is also highly intricate, that is also highly decorated, that is also filled with art and architecture. सेथि पई ताकू कह जाउची जेम ऑफ ओडिशा मुक्तेश्वर टेम्पल. तापर हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. Which of the following statements about Odishan temple architecture is or are correct? Odisha temples are known for their religious vitality. तापरे सेकेंड ऑप्शन, Odisha temples are known for their architectural superiority with the Kalinga pattern of architecture. Question number 10. अच्छा, which are correct? अच्छा, Odisha temples are known for their religious vitality. माने धार्मिक दृष्टि देखिले Odishan temple it has got its importance. Odishan temple architecture or Odishan temples, they are famous for their religious vitality. जगन्नाथ में प्रसिद्ध, सूर्य में प्रसिद्ध, लिंगराज में प्रसिद्ध, ये जो रिलीजियस इंपोर्टेंस, रिलीजियस वाइटैलिटी, रिलीजियस इंपोर्टेंस में ओडिशान टेम्पल आर्किटेक्चर टेम्पल्स आर आल्सो फेमस. सेकेंडली, ओडिशान टेम्पल्स आर नोन फॉर देयर आर्किटेक्चरल सुपीरियरिटी विथ द कलिंग पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर. इट इज आल्सो करेक्ट. कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो आम कहते रेख स्टाइल, पीढ़ स्टाइल बा कखर स्टाइल, से गुड़ाक ओडिशान टेम्पल आर्किटेक्चर तीन भाग में विभक्त होती है. जिते मंदिर देखुचे से तीनोटी स्टाइल मंदिर देखुं ओडिशा रे. सो ओडिशान टेम्पल are known for their architectural superiority with the Kalinga pattern of architecture. So both 1 and 2, that is the answer. Both are correct. 1 and 2 both are correct. बुझिएला? Temple, Odishan temple is famous for their religious vitality, for their religious importance. धार्मिक दृष्टि मंदिर गुड़ाकर बहुत इंपोर्टेंस रही. Second, it is filled with architectural art and architecture. Architectural superiority that is also famous in Odishan style of temple architecture or Kalinga style of temple architecture. तेणु ओडिशार मंदिर गुड़ाक कारुकार्य प्रसिद्ध प्लस देवदेवी प्रसिद्ध. फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज आल्सो फेमस. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. अच्छा, तापर आसीबा हमें क्वेश्चन नंबर 11. पट्टचित्र. Consider the following statements regarding Pattachitra, a traditional art form of Odisha. Pattachitra कौन कहला? कोथि तैयारी हुए पट्टचित्र टा कौन? There is painting. Mainly it is originated, it is based on the paintings of Jagannath or Odishan tradition, Odishan mythology. मनकर केते गोटे जगह तुम बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ चित्र देखिबो पट्टचित्र रे. आउ केते जगह कांची अभियान चित्र भी देखिबो. मानिक गौडुणी थी, कला घोड़ा धला घोड़े बलभद्र जगन्नाथ होते दही धरिकी गौडुणी थी. जो कांची अभियान थिला सालुभ नरसिंह कांची अभियान करते पुरुषोत्तम देव सालुभ नरसिंह. तेणु से चित्र भी रही. ओडिशार फ्लोरा एंड फौना, ओडिशार किसी जीवजंतु किसी वृक्षलता से चित्र भी रही पट्टचित्र भितर. सो पट्टचित्र अपनी कौन तैयारी हुए? व्हिच इज द मटेरियल? पट्टचित्र मेन मटेरियल कौन? पेपर करती, पेपर ऊपर चित्र करती कि palm leaf. Originally it was made, now it is made on canvas. एबे canvas रे हम करूचंती, किंतु originally it was started the painting on the palm leaf. ताଳ पत्र ऊपर पेंटिंग करा होतिला. That is पट्टचित्र. आउ एबे हेलानी ताको हमें canvas ऊपर भी करूचंती. तेनु कोन तार रही ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ओडिशा. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The themes of Pattachitra are primarily secular, focusing on nature and rural life. Chitrakaras or painters often use their homes as studios and receive assistance from family members. Palm leaves can be used as an alternative canvas material in Pattachitra. What a question. Consider the following statement regarding Pattachitra. One dela kono, the themes of Pattachitra are primarily secular, focusing on nature and rural life. It is correct. It is secular no. It is religious. Our rural life ro kiछि nahi setire. It does not focus on rural life, nature and rural life. केवल it is based on mythology. It is based on religion. तेणु धर्म उपरे बा mythology पौराणिक तथ्य उपरे आधारित होउची पट्टचित्र. तार बेसिक एलिमेंट. सेकंड हैला चित्रकर जोने पेंटर्स. तो चित्रकरस often use their homes as studios and receive assistance from family members. पट्टचित्र जो कलर्स माने को कलर यूज कर जानछो? नेचुरल कलर. बरगछर अठा गोटे अठारे तैयारी हुए सेटा.
आउ जो माने अंगार कला रंग गुड़ा सब ए जो वुडन जो बंट वुड जोड़ा सब से तैयारी होउची आउ ग्रीन कलर जोड़ा सब लीव्स गुड़ाक गछर पत्र ए सब दीज आर रॉ मटेरियल कौन केमिकल बा कलर किसी यूज करती ना से So chitrakarars or painters, they often use their homes as studios and receive assistance from family members. এটা কেতে करेक्ट करेक्ट रघुराजपुर तुम देखियो जो शिल्पी ग्राम ताको ना ए करा हिज रघुराजपुर शिल्पी ग्राम करा हिज इन एवरी हाउस होल्ड यू सी माने सीनियर माने एजेड लोक जो माने थिबे तांका परठारु जो माने प्रेजेंट जनरेशन समस्त लागि थिबे चेन प्रोसेस रे किए अठा कलेक्शन करिवो किए कलर को रांधिबो किए ताको कैनवास प्रिपेयर करिवो किए सब जाई सुखिला बा जो ग्रीन लीव्स आनी ताको प्रिपेयर करिवो कलर ए सब गुडाक तेनु तांकर घर गुडाक गोटे स्टूडियो परि काम करे एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन पेंटिंग तेनु शिल्पी ग्राम बोली ताको कहिछि रघुराजपुर पुरी जिल्ला रे चित्रकर और तो देखी रघुराजपुर जाइछ केबे मु से गां को जाई चंदनपुर भीतर जो रास्ताटा अछि चंदनपुर भीतर को गले रघुराजपुर गांटा So chitrakarars or painters often use their homes as studios and receive assistance from family members. ता छडा थर्ड हला कोन एटा करेक्ट अछि से कोन कहै which is correct. Palm leaves can be used as an alternative canvas material in Pattachitra. Palm leaves they are also alternate to canvas. हम जो canvas use कर canvas पुनी कोन जो layer of cotton गोटे गोटे लेयर ऑफ कॉटन कॉटन एते मोटा मोटा केमथि ताको लेयर के ताको पूरी पेस्टिंग कराई छि तापर आ गोटे लेयर पूरी पेस्टिंग कराई छि से गोटे थिक फॉर्म रे तयारी हि छि कैनवास गुडा को सो इथर कोटा ठीक हला ताले 2 and 3 बी इज करेक्ट एटा क्लियर हे गेला द थीम्स ऑफ पट्टचित्र आर प्राइमरीली सेकुलर नुह फोकसिंग ऑन नेचर एंड रूरल लाइफ नुह चित्रकार पेंटर्स दे ऑफन यूज देयर होम्स एज स्टूडियो एंड रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम फैमिली मेंबर्स ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली दे आर एंगेज्ड इन painting activities. Palm leaves can be used as an alternative canvas material. Canvas material palm leaf both alternative material use करा जाई पारुछि. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन का सिबा with reference to the various dance forms of Odisha which of the following statement is correct? कोटा करेक्ट अछि Odissi dance has its roots in Devodasi performances and often depicts the sacred love between Lord Krishna and Radha. Chhau is a tribal martial dance originating in Sambalpur known for its energetic percussion. Gotipuo involves young male dancers with dress as female characters and perform acrobatic maneuvers. अच्छा देखिबा First option देछि which of the following statement are correct? Odissi dance has its roots in Devodasi performance and often depicts the sacred love between Lord and Krishna, Lord Krishna and Radha. Odissi dance तार root होछि Devodasi performance कोन Devodasi माने जानछो they think that मंदिर रे they think the Devodasis एबे त Devodasi आउ के राजी हेले नै एबे बंद हे गलानी कुकिल देवदासी थिले सबुठार शेष बोते देवदासी बुढ़ी देवदासी प्रथा एबे मंदिर रे बंद हेछि तेनु देवदासी माने they dedicated themselves and they think that they have married to Lord Jagannath से माने विवाह करते नहीं से माने भाबंती आमे जगन्नाथ को ही विवाह करिछु they are completely dedicated towards the Lord से माने हेले देवदासी they dedicated themselves as the dancers मंदिर रे दशावतार नृत्य जो करा जाय देवदासी नृत्य जते बड़ सिंहार बेस हुए राति रे पहुड़ पड़ला पूर्वरु से देवदासी मान नृत्य करंती सो ओडिसी डांस has its roots in देवदासी परफॉर्मेंस से देवदासी परफॉर्मेंस होची ओरिजिनली सेठु ही आसी छि ओडिसी डांस आ ओडिसी डांस रे कोन होची द लव बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड राधा दैट इज द मेन थीम ऑफ द ओडिसी डांस एटा करेक्ट छौ इज ए tribal martial dance originating in Sambalpur known for its energetic percussion छौ डांस हो जो ट्राइबल मार्शल डांस माने कोन से माने खंडा धरिथिबे बर्छा धरिथिबे ता भिते नाच करथिबे छौ डांस इज ट्राइबल मार्शल डांस originating in Sambalpur छौ डांस संबलपुर कोन छौ डांस होची मयूरभंज so this is wrong it is not performed in Sambalpur it is not originated in Sambalpur Tachada. Third, Gotipo involves young male dancers who dress as female characters and perform acrobatic maneuver. It is correct. Gotipo. Gotipo जो माने पुआ माने नाच करंती झिया माने को ड्रेस पिंधिकरी पुआ माने नाच करंती एवं गोटिपर आ गोटे एबे हेलान चेंज हेलान टिके से माने निजे while they are dancing they also sing the song से निजे गीत गाउथुबे एवं परफॉर्म करूथुबे किंतु आजि काली तांकर सिंगर माने अलगा अछंती माने केवल डांस परफॉर्म करूछंती ओरिजिनली द गोटिपुआ while dancing they are also singing the song दासकाठा होची काठी दुईटा काठी जो
से निजे गीत गाती दासकाठिया आ पाला भी सेमती दासकाठिया पाला पाला गुड़ा केतेबेले करा जाए कौन सी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द चाइल्ड जदि घरे गोटे पुओटे जन्म है कि पिला जन्म हेले तार जन्मदिन मानक पाला करा जाए से तेणु पालारे से पालारे मध्य गीत गाँति से निजे गाँति परफॉर्म करती पाला दासकाठिया है से निजे गीत गाँति परफॉर्म करती इंस्ट्रूमेंट जोटा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जोटा दासकाठिया जोटा काठी साहाय्य से किसी म्यूजिकल साउंड माने किसी रिदमिक साउंड से आसे काठ सहित किसी घुंगुरा पर लगी था से तेणु से गोटे माइथोलॉजिकल स्टोरी को डिस्क्राइब करती गोटे पौराणिक कहानी को डिस्क्राइब करती से राति दासकाठिया परफॉर्म करती आ छऊ डांस है कौन ट्राइबल मार्शल डांस इट हैज ओरिजिनेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नॉट इन संबलपुर गोटीपुओ है कौन आजिकली तो से निजे केवल डांस करुँच कि ओरिजिनाली गोटीपुओ दे आर ड्रेस्ड इन द फीमेल फॉर्म महिला झील मान ड्रेस मान पिंधुले साड़ी पिंधुले डांस करुले व्हाइल डांसिंग दे आर आल्सो सिंगिंग द सॉन्ग एका संगे नृत्य और गीत गाउथिले गोटीपुओ माने सो इथर कोटा करेक्ट आसिला 1 and 3 अच्छी हाँ 1 and 3 बोथ आर करेक्ट तेरे ये सब माने छऊ कौन बा गोटीपुओ डांस कौन गोटीपुओ होची प्रकृत रे ओरिजिनली दे आर द मेल पुओ माने से माने थिले यंग मेल डांसर्स तापर जीवा क्वेश्चन नंबर 13 डालखाई डांस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ओडिशा डालखाई तो समस्त कहि दे परिबे डालखाई इन संबलपुर डालखाई डांस इट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ओडिशा अच्छा मयूरभंज रे कौन आसिला डालखाई संबलपुर ढाला डालखाई अच्छा मयूरभंज ला छऊ पुरी रे आसिला कौन गोटीपुओ आउ कटक आसिला कटक रे हमें कौन कहले घोड़ा नाच कटक कैवर्त सोसाइटी माने कैवर्त फैमिली कैवर्त माने होचंती केउट जो माने फिशरमैन फैमिली तेन घोड़ा नाचटा कोठी हुए साउथ रे थाए कि घोड़ा नाच मतलब होची कटक बोधे नले कटक रा कौन अछि जो डांस फॉर्म एटा डांस फॉर्म कथा पचरची माने को डांस अछि को डिस्ट्रिक्ट रे अच्छा एटा चेक करबे टिके तो कोन थिबो बोली अच्छी माने घोड़ा नाच भी कटक चैती घोड़ा नाच जो कहती चैती घोड़ा सेटा होची कटक तेर छौ हैला मयूरभंज पुरी रे हैला गोटीपुओ नाच संबलपुरी पुरी गोटीपुओ ना मेनली से जो हमें कहले गौड़ गौड़ नाच सेटा ताको कहू गौड़ नाचटा कौन कह जाने ना गौड़ मान गोटे भल नाटे अच्छी गौड़ नाच एल रे कौन नाटा एल लाउडी लाउडी लौड़ी ना ना गौड़ कहे से हूँ लौड़ी लौड़ी खेल कौन माने कटक लिखी कटक इंक्लूडिंग कटक लौड़ी लिखी हाँ लौड़ी को मैंने खेल को ग्रुप लोक मैंने खेलती लौड़ी नाच लौड़ी हूँ किए कहल माने जो माने गाई चराती जो माने काउ हर्ड से माने लौड़ी नाच से हुए हाँ गाई सेफर्ड जो माने होचंती से माने ताकर लौड़ी नाच सेटा एल मु कहतली कोन से बोली हठात मन पड़ नथिला लौड़ी नाच तेरे कटक रा देखिबा एटा आउटे क्लारिफाई करिबा घोड़ा नाच अच्छी कि लौड़ी अच्छी देखिबा टिके किंतु घोड़ा नाचटा होची मेनली तो कैवर्त सोसाइटी कैवर्त माने अच्छी ना कैवर्त माने फिशरमैन तेरे कटकटा जेते कोस्टल एरिया कोस्टल डिस्ट्रिक्ट तेनु सेति भाउची घोड़ा नाचटा बोधे हेतिबो अच्छा तापर जीवा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को ताराकसी ए प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा इज रिलेटेड टू एटा तो समस्त कहि दे परिबे एथरा किछ भाबियर नै कि कहि परिबोनी हाटे किलो ताराकसी कोन
जो फिलिग्री वर्क रूपा काम जो आम कहूँ तारकसी सो तारकसी प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा एटा इजी अछि रिलेटेड टू पट्टचित्र नो सैंड आर्ट नो सिल्वर फिलिग्री एप्लिक वर्क एटा सिल्वर फिलिग्री पट्टचित्र आम देखले रघुराजपुर सैंड आर्ट पुरी सुदर्शन पट्टनायक पुरी सैंड आर्ट सिल्वर फिलिग्री है कटक एप्लिक वर्क कोठी पिपिली चांदुआ एप्लिक वर्क है पिपिली सिल्वर है कटक तापरे सैंड आर्ट है पुरी आउ पट्टचित्र है भी पुरी पुरी देखिपार रघुराजपुर जहाँ चलो सो तारकसी प्रोमिनेंट आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा इज रिलेटेड टू कटक रिलेटेड टू सिल्वर फिलिग्री रूपा काम रूपा तारकसी काम सेटा हला फिलिग्री वर्क बुझीला कौन प्रोब्लेम है ठीक अच्छे अच्छा तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ ओडिशा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भाषागत विभिन्नता कौन देखौछि एथिरु ओडिया बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन फैमिली इज द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा ट्राइबल लैंग्वेजेस स्पोकन in Odisha belong to the Dravidian and Munda language families. Odia shares close linguistic ties with Tamil and Telugu. Which of the following statement accurately describe the linguistic diversity? ओडिशा रा भाषागत विभिन्नता कौन देखौछि एथिरु ओडिया बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन फैमिली इज द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा इंडो आर्यन फैमिली कौन ओडिया लैंग्वेज टा काहाको इंडो आर्यन फैमिली होची संस्कृत ओरिजिनली संस्कृत इंडो आर्यन फैमिली सो ओडिया बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन फैमिली इज प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा ट्राइबल लैंग्वेजेस स्पोकन इन ओडिशा बिलोंग टू द द्राविडियन एंड मुंडा लैंग्वेज फैमिली द्राविडियन लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेज होची द्राविडियन लैंग्वेज ट्राइबल लैंग्वेज आ मुंडा फैमिली से माने दे आल्सो बिलोंग टू द द्राविडियन माने ट्राइबल फैमिलीज ट्राइबल लैंग्वेज होची मुंडा लैंग्वेज मुंडाटा कोठी अछि ओडिसा के अंचल रे कंधमाल मुंडा कहंती मुंडा लैंग्वेज ना केउंझर अच्छा सो ट्राइबल लैंग्वेजेस स्पोकन इन ओडिशा बिलोंग टू द द्राविडियन एंड मुंडा लैंग्वेज फैमिलीज अच्छा ये जो ट्राइबल लैंग्वेज तो बहुत लैंग्वेज ट्राइबल भाषा अच्छी विभिन्न प्रकार भाषा अच्छी कोया भाषा अच्छी कोलो भाषा अच्छी सांताली भाषा अच्छी मुंडा भाषा अच्छी सो दे बिलोंग टू द द्राविडियन एंड मुंडा लैंग्वेज द्राविडियन लैंग्वेज को तार ओरिजिनली दे बिलोंग टू द्राविडियन लैंग्वेज आउ ओडिया लैंग्वेज ओरिजिनली ई बिलोंग टू द इंडो आर्यन फैमिली माने टिके मार्जित भाषा ओडिया लैंग्वेज इट इज द पॉलिश्ड लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज होची संस्कृत लैंग्वेज आर्य मानकर समय जो लैंग्वेज वेद लिखाई रामायण महाभारत पुराण जहाँ लिखाई एपिक्स दे आर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज सो ओडिया बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन फैमिली इज प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा एटा ठीक अछि ट्राइबल लैंग्वेज स्पोकन इन ओडिशा बिलोंग टू द द्राविडियन एंड मुंडा लैंग्वेज एटा भी ठीक अछि ओडिया शेयर्स क्लोज लिंग्विस्टिक टाइज विथ तमिल एंड तेलुगु तमिल और तेलुगु संगे साउथ इंडियन लैंग्वेज सहित ओडिशा रा किछि लिंक नाही नॉर्थ इंडिया लैंग्वेज होची इंडो आर्यन लैंग्वेज अछि और ट्राइबल लैंग्वेज लिंक होची द्राविडियन एंड मुंडा लैंग्वेज ए दिटा अछि करेक्ट एटा करेक्ट नुह सो 1 and 2 both 1 and 2 which of the following statements accurately describe the linguistic diversity in Odisha question number 15 अच्छा statement 1 and 2 हाँ अच्छा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट काहे कि ना द प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ओडिशा इज ओडिया दिस लैंग्वेज बिलोंगिंग टू द इंडो आर्यन फैमिली शेयर्स क्लोज लिंग्विस्टिक टाइज विथ बेंगली एंड आसामी ओडिया रा भी लिंक अछि बेंगली और आसामी लैंग्वेज सहित बेंगली एंड आसामी दे आर आल्सो द इंडो आर्यन दे बिलोंग टू द इंडो आर्यन फैमिली बेंगली और आसामी लैंग्वेज अच्छा स्टेटमेंट 2 हैला कोन the Adivasis in the state they continue to communicate in several tribal languages which are the Dravidian and Munda language जो आदिवासी मानकर भाषा जोटा तार origin होची they belong to the Dravidian language and the Munda language so this is also true so both 1 and 2 are correct तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन number 16 with reference to Al-Biruni asla medieval India have
With reference to Al-Biruni, consider the following statement. He was one of the jewels in the court of Mahmud of Ghazni. He wrote Kitabul Hind in Persian language. He translated Patanjali's work on grammar. ଏଥିରୁ how many of the above statements are correct? Question number 16 देखिबा. Al-Biruni was one of the jewels in the court of Mahmud of Ghazni. Mahmud का जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी तांकर जो से कोर्ट रे से जण थिले Al-Biruni किए से थिले? Who was Al-Biruni? हिस्टोरियन जणे ही थिले Al-Biruni, ऐतिहासिक जणे थिले Al-Biruni. कहार ना महमूद ऑफ गजनी. गजनीर महमूद कर जो राजसभा थिला सेथिरे से जणे थिले ग्रेट हिस्टोरियन. He was Al-Biruni. He wrote Kitabul Hind in Persian language. Kitabul Hind. এটা करेक्ट अछि? Kitabul Hind ठीक अछि, but it is not in Persian language. It is written in Arabic language. So this is wrong. He translated Patanjali's work on grammar. पतंजलिंकर जो महाभाष्य, पतंजलि लिखिछन्ती कोन महाभाष्य, that is the grammar, Patanjali's grammar. पतंजलिंकर बुक होछि महाभाष्य. এটা কোয়াডে গলা डिलीट का पड़ेलानी एठू कोडे छाड़. पतंजलिंकर महाभाष्य, दैट इज द ग्रामर ऑफ पतंजलि. आ कोन लिखचंती? पतंजलि योगशास्त्र. पतंजलिंकर गोटे होची योगशास्त्र आ गोटे होची पतंजलिंकर ग्रामर हला महाभाष्य. अच्छा, आकु जे ट्रांसलेट करिसंती, ही ट्रांसलेटेड पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर. इट इज आल्सो करेक्ट. पतंजलिंकर जो अछि ताकु ट्रांसलेट करिसंती, बट इन व्हिच लैंग्वेज हमें जानिया दरकार. पतंजलिंकर एतिक से पचारिछि ठीक अछि, ही ट्रांसलेटेड पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर. पतंजलिंकर जोटा होछि महाभाष्य, इट इज ट्रांसलेटेड बाय Al-Biruni. It is also translated into Arabic language. So, with reference to Al-Biruni, consider the following statement. First, he was one of the jewels in the court of Mahmud of Ghazni. This is correct. Mahmud का राजा सभारा से जने थिले बहुत बड़ा ऐतिहासिक जने. He wrote Kitabul Hind in Persian language. It is wrong. He wrote Kitabul Hind in the Arabic language. He translated Patanjali's work on grammar, that is Mahabhashya. But it is also translated into Arabic language. Arabic भाषा रे ताको ट्रांसलेट करछथि पतंजलिकर महाभाष्य को. तो हमर करेक्ट हला कोटा 1 and 3. Only 2. So 1 and 3 both are correct. It hela question number 16. 1 and 3 are correct. तापर जिया question number 17. With reference to Ibn Battuta, consider the following statements. Ibn Battuta. He was a Persian traveler. He was appointed as the Qazi or judge of Delhi by Firoz Shah Tughlaq. He wrote Rihla, which provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent. With reference to Ibn Battuta, which is correct. Acha. He was a Persian traveler, Ibn Battuta. It is not correct. Statement 1 is not correct. He was a traveler. He came to India, but he belonged to Morocco. He was not a Persian traveler, rather he belonged to Morocco. He was appointed as the Qazi or judge of Delhi by Firoz Shah Tughlaq. Statement 2 is also incorrect. से कहा समय थिले? फिरोज शाह तुगलक बेले थिले? से थिले मोहम्मद बिन तुगलक, not फिरोज शाह तुगलक. He was appointed as the Qazi or judge of Muhammad bin Tughlaq. अच्छा 3. It hala with reference to Ibn Battuta, consider following statement. He was a Persian traveler. It hala wrong.
He was appointed as the Qazi of Judge of the Delhi by Firoz Shah Tughlaq. No, it is also wrong. He wrote Rela, which provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent. The third statement is correct. Ibn Battuta तांका बही हैला his book of travels, it is known as Rila. सेते से कौन लिखिचंती? It is written in Arabic language. Rela, it is written in Arabic. He wrote Rela, which provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the माने एटा गोटे आई विटनेस अकाउंट. आई मोरक्कोटा कौन कोठिकार? अफ्रिकान कंट्री. अफ्रिकान कंट्री होची मोरक्को. हाँ इस्लाम स्प्रेड करथिला एक्सपांड. हाँ हाँ इस्लाम. इट इज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम. तेणु से मोरक्को रु आसीथिले भी से ही वाज एन एक्सपर्ट इन अरबिक लैंग्वेज. अच्छा he was a Persian traveler. एटा भूल हैला. he was a traveler who came to India during the time of Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq का समय से आसीथिले and he came from Morocco. He was appointed as the Qazi or the judge of Delhi by Firoz Shah Tughlaq. No, it is wrong. He was appointed by Muhammad bin Tughlaq. He wrote Rela. Rela होची his eye witness account. Muhammad bin Tughlaq का राजसभा रे से जहाँ देखिले ताकु सब निजे लिखि जाइछन्ती in his own diary. That is known as Rela. It is the eyewitness account which provides extremely rich and interesting details about the social and cultural life in the subcontinent. So contemporary social and cultural life से समर सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था कौन थिला लोक मानकर during the time of Muhammad bin Tughlaq. He has described in the book which is known as Rela, and the book it is also written in Arabic language. एमती गोटे पढ़ी पारे एठी अरबिक लैंग्वेज आमे जदी जानी न जानी परिबा से एठी गोटे लिखत द बुक रेला इट इज रिटन इन मोरक्कन लैंग्वेज ऑन पर्शियन लैंग्वेज एमती भी पढ़ी जाई पारे. जदि आमे अरबिक लैंग्वेज टाको आस रिलेट न करिबा ताले आमे यार आंसर भी देई परिबानी. आकु रिलेट करी अन जदि कोन क्वेश्चन हेई परिबो. सो रेला इज द आई विटनेस अकाउंट ऑफ इब्न बतूता. इब्न बतूता ही इज अ ट्रैवलर. ही केम फ्रॉम मोरक्को. ही रिमेन्ड इन द रॉयल कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. सो क्वेश्चन नंबर 17 हेला हमरो अरबी ए जो रेला जो बुकटा दैट इज आल्सो रिटन इन अरबिक लैंग्वेज. अरबिक भाषा लिखाई पर्सियन ट्रैवलर नुह से मोरक्को आसते appointed the Qazi or the judge of Delhi by not by Firoz Shah Tughlaq. He was appointed by Muhammad bin Tughlaq because he remained in the royal court of Muhammad bin Tughlaq, and he wrote Rela. Rela is the eyewitness account of Ibn Battuta, whatever he has seen in India regarding the social life as well as the cultural life. भारतर तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक अवस्था कौन थिला ताकु से निज बही रे लिखिछन. दैट इज नोन एज रेला. तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को. अच्छा यार ऑप्शन टा तळे अछि. हाउ मेनी आर करेक्ट आमे लिखिले. यार आंसर ऑप्शन टा देखो. ओनली वन कोटा हला एकटा त नुह. हाँ ओनली वन ता माने एटा करेक्ट. ओनली वन इज करेक्ट. तापर आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर हैला 18. Consider the following statements. Francois Bernier, a French man, was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Darasuko. माने तंकर ओरिजिन कोठी सेगुडा पचारुची. फ्रांकोइस बर्नियर फ्रेंच मैन बोली कहूची. इटालियन डॉक्टर पुनी कहूची मानुसी द इटालियन डॉक्टर. कंफ्यूजन टा एठी ही थिबो. अच्छा consider the following statements. Francois Bernier, a French man, was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Darasuko. The Italian doctor Manusi never returned to Europe and settled down in India. Which of the statements is or correct? अच्छा Francois Bernier as a physician to Prince Darasuko.
दारासुको किए? सन ऑफ शाहजहान, दारा सुजा मुरा औरंगजेब चारि पुओ थिले ना शाहजहान कर. So Francois Bernier, a French man, was closely associated with the Mughal court as a physician to Prince Darasuko. Darasuko होचंती शाहजहान कर पुओ, बड़ पुओ, दारा सुजा मुरा औरंगजेब. औरंगजेब सवा सान पुओ, किंतु he occupied the throne. War, fratricidal war, जो भ्रातृ विवाद रे सी विजय लाभ कले এবং सी सिंहासन आरोहण कले शाहजहान का पर औरंगजेब. But he was the youngest of his sons. अच्छा, तांकु जे चिकित्सा करथिले सी होचंती फ्रांकोइस बर्नियर. He came from France and he was closely associated with Mughal court as a physician to the Prince Darasuko. एटा ठीक अछि. Second, the Italian doctor Manussi, he never returned to Europe and settled down in India. Statement 1 is correct. केमती correct? Francois Bernier, he was a French man, he was also a doctor. He was a political philosopher as well as a historian. एते गुडी तांकर थिला ability. केवल जने डॉक्टर नथिले से, फिजिशियन नथिले, he was also a political philosopher and a historian. से काहे की आसीथिले? He came to the Mughal empire. एते गुडी क्वालिफिकेशन ना तारा आसीबार कारण कोन थिला? Why did he come to Mughal court? जेमती हुएन संग आसीथिले हर्षवर्धन का समय रे टू स्टडी द बुद्धिस्ट फिलोसफी. तांकर एम थिला हाउ टू स्टडी द बुद्धिस्ट फिलोसफी. सेति पई से विभिन्न जगह बुलिले, बुद्धिस्ट फिलोसफी गले, पुष्पगिरी को आसिले, ओडिसा आसिले, जहा तांकर अछि अचीवमेंट्स. सेमती फ्रांकोइस बर्नियर, he was a physician, he was also a doctor, he was also a he was a historian. एते गुडी तांकर थिला क्वालिफिकेशन, a doctor, a political philosopher as well as a historian. काहे कि से मुगल एम्पायर को आसीबार कोन कारण थिला? He came to India, he came to the Mughal court during the time of Shah Jahan in search of an opportunity, a job. Gote job search se asthile, in search of a job, in search of an opportunity. Job pai asithile. Mughal Empire, he was in India for 12 years from 1656 to 1668. 1556 रु 1568, 12 वर्ष काल से भारत रे थिले. Francois Bernier, associated with Mughal court, he was a physician to Prince Darasuko. से भी लिखी चंदी माने Bernier, he traveled to several parts of the country and wrote accounts of what he saw in India. तांकर भारत भ्रमण कहानी से भी लिखी चंदी. Whatever he has seen, he has written down in his own diary. तापर सेकंड ऑप्शन को आसीबा हमें द इटालियन डॉक्टर मानुसी. Italian doctor Manussi, he never returned to Europe and settled down in India. ता पछे से यूरोप को जाई नथिले and he also stayed back in India. It is also correct. Italian doctor. So both are correct. Both 1 and 2 are correct. Francois Bernier, he treated the son of Shah Jahan, he was Darasuko. And the Italian doctor Manussi, he never returned back to Europe and he settled in India. Mughal period रे, हाँ, Mughal period रे. तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को. हाँ, Ibn Battuta consider the following statement which is correct. Ibn Battuta described Delhi as a vast city with a great population, the largest in India. Ibn Battuta informs us about certain varieties of fine muslin. Muslin कौन? Fine cotton. होची muslin. अच्छा. Ibn Battuta described Delhi as a vast city with a great population and largest in India. Ibn Battuta तांकर थिला दिल्ली ऊपर इंप्रेशन एमती थिला कौन? Ibn Battuta, he found the cities in the subcontinent, Indian subcontinent, full of exciting opportunities for those who had necessary drives, resources and skills. The cities are densely populated. The cities are also prosperous. Then Ibn Battuta described Delhi as a vast city with a great population and largest in India. तांकर अकाउंट रे से लिखि चंती तो दिल्ली as a vast city with a great population and largest. से समय रे इबन बतुता का समय रे तापरे इबन बतुता informs us about certain varieties of fine muslin. The statement 1 is correct, statement 2 is also correct. Besides Indian textile, particularly cotton cloth, fine muslins, silk and satin, they are also produced in India.
cotton garment और silk garment और muslin जोड़ा होची fine cotton they are also produced in India ताको निजे से observe करिसंती. So both are correct. Ibn Battuta he informs about the certain varieties of fine muslin. फाइन मसलिन को को माने से केमती जानिले कोन पई से जानिले जे फाइन मसलिन भी इंडिया से समर प्रोड्यूस करथला बोली जो माने नोबल्स जो माने थिले जो माने रिच पीपल थिले दे ओनली यूज द फाइन मसलिन्स जो माने धनिक श्रेणी लोक माने सम्राट वंश लोक माने थिले से मान को ऑब्जर्व करजे से माने यूज करथिले फाइन मसलिन तेनु से लिखुचंती ताका अकाउंट रे जे इबन बतुता ही इन्फॉर्म्स अस अबाउट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फाइन मसलिन बिकॉज़ इट वाज यूज्ड बाय ओनली द नोबल्स एंड द रिच पीपल इन द सोसाइटी ताको से निजे जो आई विटनेस अकाउंट जहां देखुचंती ताको डायरी लिखुचंती से देखुचंती दिल्ली गोटे वास्टली पॉपुलेटेड ग्रेट पॉपुलेशन थिला दिल्ली वास्ट सिटी थिला लार्जेस्ट इन इंडिया थिला एवं जो माने अछंती रिच और नोबल पीपल से माने फाइन मसलिन यूज करथिले तेनु ही हैज मेंशनड इन हिज ओन अकाउंट्स इट हला बोथ आर करेक्ट 1 एंड 2 ये सबुड़ा आई विटनेस अकाउंट से किसी जहां ऑब्जर्व करछन ताको लिखि जाइछंती दैट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माने फाइन मसलिन विषय से के आम जानिबा केमती से फाइन मसलिन चाष होतिला मसलिन बाहरुतिला कोन ताको कैसे देखिबे जेतले देखले जे बहुत संख्यक अछंती नोबल्स और रिच पीपल दे आर यूजिंग द फाइन मसलिन सो इट इज हिज ऑब्जर्वेशन दैट दिल्ली वाज अ वास्ट सिटी इट वाज अ ग्रेट सिटी इट वाज अ हाईली पॉपुलेटेड सिटी एंड द पीपल द रिच पीपल दे यूज द फाइन मसलिन इट इज हिज ऑब्जर्वेशन अच्छा एटा गोटे कोन क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा एटा कोन स्टेटमेंट गोटे ना कोन इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार called Tarabad and the marketplace for male and female singers. The shops are decorated with carpets and at the center of the shop there is a swing on which sits the female singer. In the middle of the marketplace there stands a large cupola which is carpeted and decorated and in which the chief of the musicians takes his place every Thursday after the dawn prayers accompanied by his servants and slaves. The above statements reflect the features of the market of which one of the following cities of medieval India? Oh, এটা মার্কেটৰ ডেসক্রিপশন গোটে দোଳି थिला সুইং थिला गोटे लेडी टी आसुला सेठी गीत गाउथिला ऑन द मिडिल ऑफ द मार्केट प्लेस देयर स्टार्ट्स ए लार्ज कुपला कुपला कोन कुपला कोन which is carpeted and decorated and in which the chief of the musicians take his place every Thursday after the dawn prayers accompanied by his servants and slaves. अच्छा कपुला कौन कहलो एटा गोटे डोम शेप गोटे अर्ध गोलाकार गोटे चांदुआ नुह माने गोटे स्टेज गोटे स्टेज टा अर्ध गोलाकार दैट इज कोपला कुपोला कुपोला बोली कहता लार्ज कुपोला अच्छा एटा कौन देखिबा इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल बाजार्स कॉल्ड ताराबार एंड द मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स एथे कौन दउची इंफॉर्मेशन देखिबा एटा क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा ताराबार कोठी तुम एथु जानि परिबो से कहा समय रे कह जाउची दौलताबाद Tarabad it is situated in Daulatabad, a big bazaar, a big marketplace for male and female singers. Daulatabad, why it is in news? I mean, Muhammad bin Tughlaq transfer of capital from Delhi to Devagiri or Delhi to Daulatabad. अच्छा से दौलताबाद अंतर्गत होची ताराबाड़ गोटे जगह Daulatabad there is a marketplace for male and female singers which is known as Tarabad. It is one of the greatest and the most beautiful bazaar. It has numerous shops and every shop has a door which leads to the house of the owner. The shops are decorated with carpets and at the center of the shop there is a swing on which sits the female singer. In the middle of the marketplace there stands a large cupola dome-like structure which is carpeted and decorated and in which the chief of the musicians take his place. Thursday after the dawn prayer accompanied by his servants and slaves. एटा किए लिखिछंती जो स्टेटमेंट ता कहार एटा स्टेटमेंट इबन बतुता हम सेटा प्रथम देखबा एते स्टेटमेंट ता कहार एटा तने इबन बतुता माने मोहम्मद बिन तुगलक तने मोहम्मद बिन तुगलक का समय रे ही से ट्रांसफर करथले कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद सो दिस स्टेटमेंट इज बाय इबन बतुता
तेणु से गोटे बजार ऊपर तांका ए स्टेटमेंट देइचंती the above statements reflect the features of the market of which one of the following cities of medieval India दिल्ली दिल्ली आग्रा फतेहपुर सिक्री दौलताबाद एटा होची दौलताबाद रो मोहम्मद बिन तुगलक न समय आसी थिले इबन बतुता सो ही ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद तेन दौलताबाद गोटे बजार गोटे सीन बजार गोटे एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ से देखिले सेठी सेटा दौलताबाद ऊपर से लिखिचंती दिस इज द व्यू ऑफ इबान बतुता ऑन द मार्केट प्लेस Tarabad, which is situated in Daulatabad during the time of Muhammad bin Tughlaq. With reference to medieval India, Uluk and Dawa were well known as Uluk kon puni Dawa kon. With reference to medieval India, Uluk and Dawa were well known as medicine, postal system, centers of iron and steel making, army officials. Uluk and Dawa. Ibn Battuta was amazed by the efficiency of the postal. Oh, अच्छा एटा से इबन बतुता का समय मोहम्मद बिन तुगलक का समय विथ रेफरेंस टू medieval India उल्लुक एंड दावा were well known as medicine, postal system, centers of iron and steel making, army officials. ये जो उल्लुक एंड दावा it was mentioned by Ibn Battuta in his record, in his account, that it means to the postal system. In India, the postal system is of two kinds. दुई प्रकार डाक नवानिवास माने करथिले पोस्टल सिस्टम केमती खान करथिले हाँ गोटे होची माने घोड़ा साहाଯ୍य जाउथिला पोस्टल सिस्टम दूर दूर जगह थिला ताको घोड़ा रे सेना पठाउथिले चिठी दिया निया होउथिला ए जो उलुक horse was used in ulug. Ulug is the system, the postal system in which horse was used to deliver the letters, to deliver the information. किसी चिठी थिला किसी इनफॉरमेशन थिला ताकू प्रेरण करिया पई पठाया पई मोहम्मद बिन तुगलक का समय रे से माने जो पोस्टल सिस्टम फॉलो करथिले सेतिर गोटे थिला उलुग इट वाज द लेटर्स द इनफॉरमेशंस आर कैरिड बाय द हॉर्स आ दावा कोन बाय रनिंग निजे दौड़ी दौड़ी के जाउथिले से माने men by running चिठी देवा पे से माने ताको दौड़ी के जीवा को पडुथिला सो दीज आर द टू सिस्टम्स रिलेटिंग टू द पोस्टल सिस्टम इन medieval India और खाली मने रख खाली इधर अब टर्म मुडा का इंपोर्टेंट गोटे होची उल्लू गोटे होची दावा इन इंडिया द पोस्टल सिस्टम इज ऑफ टू काइंड द हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलुग एंड द एठाला हॉर्स पोस्ट आउ दावा हला कोन ना एठाला फुट पोस्ट सर पादरे चाली चाली दौड़ी की जाउथिले सो दीज आर द टू टाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द इन द पोस्टल सिस्टम तेनु डाक नबा आनिया करिया पई पोस्टल सिस्टम रे ए प्रकार दुई प्रकार मेथड थिला गोटे छि उल्लू गोटेला दावा उल्लू वाज इन द उल्लू सिस्टम द हॉर्सेस वर यूज्ड टू डिलीवर द लेटर्स और टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन एंड सो फार दावा इज कंसर्न द पीपल the men they supplied or they informed the people by running सेमान को दौड़ी की जाए कि इन्फॉर्म करिया पडुथिला सो दिस इज द सिस्टम द पोस्टल सिस्टम रिलेटेड उल्लुक एंड दावा ए भलिया सिस्टम थिला medieval इंडिया रे डाक प्रथा दुई प्रकार थिला गोटे होची उल्लुक गोटे होची दावा तापर हमें जीवा सेकंड 22 एटा पढ़ाई थे तो सुविधा लगता जे पढ़ी दी था तो एगुड़ा सिस्टम गुड़ाक माने पढ़ाई नहीं medieval India तो टिके कष्ट लगता पुनी पढ़िबा ताकू आमे पढ़िबा रिटे सेतुडी आउथे तमरो रिवाइज हि जिवो टिके खाली जानि था टर्म गुड़ाक मेन क्वेश्चन द टर्म को नेकी रिलेट करी क्वेश्चन ही आसीबो हां माने गोटे घोड़ा जीवो अप टू 4 माइल्स देन अनदर 4 माइल्स इट इज कवर्ड बाय अनदर हॉर्स या तो रिले हाँ अच्छा ए हॉर्स इट हैज टू कवर ओनली 4 किलोमीटर हाँ सेटा तो रिले अप टू 4 किलोमीटर ए हॉर्स इट हैज टू रन और इट हैज टू गो फॉर 4 किलोमीटर्स इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज
then after 4 kilometer another horse is there, he has to carry on the message. Yeah to it has oho 3 stations per mile ତ ତିନିଟା ଜାଗା ତାକୁ ଷ୍ଟପେଜ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନା କଣ ଲେଖୁଛି ସେଟା ସେମିତି ଓ ରିଲେ ରେସ୍ ଆମେ ଯେମିତି କରନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ ରିଲେ ରେସ୍ ଏଟା ହଉଛି ହର୍ସ ରିଲେ ରେସ୍ ଏଟା ହଉଛି ରିଲେ ରେସ୍ ବାଇ ଦ ମେନ୍ ହଁ ଏଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା ଏଟା केवल खाली आमे जानिदेले इन जनरल जानिदेले द मेसेज सप्लाइड बाय द move from one place to another with the help of the horse, that is known as uluk. How the people when they carried, that is known as the हाँ ओ अच्छा एवरी 4 miles से माने थिले हाँ ता माने जणे जीवा 4 miles पर्यंत आफ्टर 4 miles से रहिला आ गुटे गला एटा तो रिले रेस हो सेही भलिया आउ आरटा होची जो मेन जो नोदले एवरी 3 किलोमीटर 3 stations per mile अच्छा 1/3 of a mile तेनु से माने दौड़ी जातले 1/3 of a mile सेठी आ गुटे ग्रुप थिले से माने ताको निक जाउत बस एडी जे बहुत जन को अपॉइंटमेंट देथिबे हाँ 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 माने 1 mile मैक्सिमम ता भीतर तीनटा रगेर थिला ताकर ग्रुप तीनटा पोस्ट थिला एटा बहुत माने ट्रिकी क्वेश्चन एटा सब तार कांसेप्टटा क्लियर नहले जानि परिबानी जे उल्लुकटा कोन बोली करी मु मजा कथारे कहबी कांसेप्ट क्लियर नहले कोन असुविधा हो या परे अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हला 22 with reference to an excerpt from Francois Bernier's description of the land ownership, consider the following statement, which is correct. According to him, according to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former. He was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful to both the state and its people. Crown ownership of land रा कौन प्रॉब्लम थिला crown ownership हेले कौन हबो जदि crown रहिला सब तक land ownership हेला common man ताको एन्जॉय करि परिबो नाही अच्छा crown रो जो land crown हते रहिला it will be enjoyed by the descendants crown रो जे descendants सेही माने एन्जॉय करिवे so the common people they will be deprived of that एटा होचे crown land रा गोटे डिमेरिट. He was firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful to both the state and its people. जदि रजांक अधीन रे बा क्राउन का अधीन रे बा सुल्तान का अधीन रे रहुतिला प्रॉपर्टी गुडा को these are both harmful to the state as well as to the people कारण सेमानकर किछ अधिकार रहु नथिला. अच्छा देखिबा प्रथम देखिया 1 स्टेटमेंट 1 कोन कहूची according to Francois Bernier Francois Bernier से की थिले हां डॉक्टर थिले पॉलिटिकल फिलोसोफर हिस्टोरियन हमें पढ़िले. One of the fundamental differences between Mughal India and the Europe was the lack of private property in the land in the former. According to him, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was the lack of private property in the land of the former. कौन है लाइटा between Mughal India and Europe was the lack of private property in land in the former. In the former man Mughal India नथिला Mughal India नथिला अच्छा ताले एटा करेक्ट अछि. He was a firm believer in the virtues of private property and saw crown ownership of land as being harmful. How crown ownership is harmful एटा हम देखिबा. He was a firm believer in the virtues of the private property and saw the crown ownership of land as being harmful for both state and its people. Kahiki? Now he thought that in the Mughal Empire, the emperor owned all the land and distributed it among his nobles. केवल से नोबल मानु के दउथिला जो माने ताका जो माने थिले nobles and the rich people and that this land had disastrous consequence for the economy and of the society. तेनु जेतु रजांका अधीन रे सब रहुतिला landed property for the common people and the state they were deprived of the landed property. Bernier argues that owing to crown ownership of land, the landholders could not pass their land to their children.
So they are deprived of any long term investment in the sustenance and expansion of the production. ଯଦି କ୍ରାଉନ ଅଧୀନରେ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ टैक्स कलेक्ट हो पार ना ये रजा खाते रहा प्रॉपर्टी गुड़ाक तेणु कॉमन मैन से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट तेणु कॉमन मैन खातु गला नहीं तेणु कॉमन मैन का जो डिसेंडेंट थे सो दे आल्सो बिकेम द सफरर्स तांकर परवर्ती पीढ़ी जो आसले से हाथ में लैंड प्रॉपर्टी रहा नहीं सो दैट आर द सिचुएशन दैट आर द कस्टम और ट्रेडिशन व्हिच वाज प्रिवालेंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड व्हेन बर्नियर ही हैज डिस्क्राइब्ड इन हिज ओन description आउटे बुझिया चेष्टा कर एटा टिके कष्ट क्वेश्चन टा अछि टिके डिफिकल्ट अछि according to Bernier one of the fundamental differences between Mughal India and Europe was that the lack of private property in the land in the former Mughal India रे नथिला lack of private property तेन Mughal India रे कोन थिला the difference between Mughal India and Europe was the lack of private property in the land in the former एटा होछि डिफरेंस मुगल आउ यूरोप तांका तो एटा ही डिफरेंस थिला सेकंड होछि ही वाज ए फार्म बिलीवर इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल टू बोथ द स्टेट एंड द पीपल एथिरे स्टेट रा से किसी टैक्स भी कलेक्शन हे पर नथिवो जेतो रजा खाते रहला लैंडेड प्रॉपर्टी तार रेवेन्यू भी इंक्रीज हे पर नथिवो आ गोटे कहला द स्टेट एंड इट्स पीपल से माने जो लोक माने थिले सेमानकर मध्ये जो माने डिसेंडेंट रहिले परवर्ती पीढ़ी परवर्ती वंशधर दे आर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द लैंड तेनु दीज आर बोथ आर करेक्ट both 1 and 2 दीटा को ठीक अच्छे एटा बुझी पाला एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन टा अछि टिके कांसेप्ट टा टिके क्लियर करो एटा रे अकॉर्डिंग टू हिम वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड इन द फॉर्मर मुगल इंडिया रे प्राइवेट प्रॉपर्टी नथिला लैंडेड प्रॉपर्टी गुडा थिला सब क्राउन लैंड थिला तेनु क्राउन लैंड रे रहिला फळे रे टैक्स कलेक्शन पाई असुविधा आ गोटे थिला कोन जो माने कॉमन पीपल जो माने थिले सेमानकर मध्य जो माने आसिले डिसेंडेंट्स दे आर आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ द लैंडेड प्रॉपर्टी सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट मुगल भारत यूरोप मध्य मौलिक पार्थक्य गोटे थिला पूर्व रे जमी रे व्यक्तिगत संपत्तिर अभाव बस से व्यक्तिगत संपत्ति गुण रे दृढ़ विश्वास थिले एवं जमीर मुकुट मालिकाना ओनरशिप यह लोकन पई क्षतिकारक बोली माने करूथिले ठीक अछि एटा बर्नियर ऑब्जर्वेशन